Very good morning to all of you. It is an honor and privilege for me to address brilliant, impressionable minds who have reached this level after very tough competition. What has been reflected a while ago by Ms. Niti Chauhan and Himanshu Dongre in representative capacity is very inspirational. I can feel the zeal with which you all are fired. You are part of governance system at a time when Bharat is on the rise as never before. Shri Sunil Kumar Gupta, Secretary to Vice President of India, a very senior IS officer of 1987 batch. But he does have another credential, which is sharing with the two very distinguished Indian Forest Service officials. He was also inducted in a central service in '86. So the dais is dominated by the '86 batch. Sri P.C. Modi, Secretary General Rajya Sabha, a veteran 1982 batch. IRS, or Chairman CBDT, a low-profile man with highly impactful results. Sri C.P. Goyal, Director General of Forests, 86 batch, Special Secretary, brings on the table, I am told, reliably, expertise, and is highly motivational. He has been a leader playing on the front foot. Dr. Vandana Kumar is a very meaningful addition, 92 batch, Indian Defence Account Service to Rajya Sabha, and brings on the table huge experience. Sri Bharat Jyoti ji, Director, the man who has steered you, the man who must have given you very tough time, the man whom you will remember all your life for making you spinally very strong. I am told he has a soft heart, but tough stance. You must have felt it more than anyone else. Sri B.R. Singh, Additional Director General, 89 batch. Officials present here. My very special greetings to two of our participants from our neighboring friendly country, Bhutan, with which we have very special connect. I will not dilate on what has been indicated. It's a diverse group. All I can take note of is none of you are from legal background, which I share. It may be a redeeming feature. If you examine the motto, and the motto has been very carefully chosen, it reflects our age-old ethos. It takes note of the contemporaneous alarming situation, and it signals what the humanity should be responding. And the motto is, Aranye te prithvi syo namastu. The forest is earth's delight. The whole world is feeling it now. The whole world is at it. But you are going to be the most significant warriors, because no one will have more effective ground reality check, ground reality impact than all of you. We had the occasion to see recently
the consequences of not being vigilant. And that is an event which we saw in Kuno National Park. Honorable Prime Minister released wild cheetahs. We got them from Africa. Enough homework has been done. People in your category have worked very hard. They have made 3 enclosures. Getting cheetah from Africa to this country is not a physical exercise. It calls for a lot of efforts. That is being done. But what is the writing on the wall? Human species seems to take this planet as its exclusive privilege. And that is why reckless exploitation, driving out wildlife, hunting it out for commercial purposes, trading, commerce, which went a few years back unchecked. Now, fortunately, every facet of ecology and environment is covered by legislation, be it water, be it air, and we know the impact more in Delhi than anywhere else. Pollution, a byproduct, pernicious byproduct, destroys our lives, changes our lifestyle, and we are made to suffer diseases which should never be there. In such a situation, your role is going to be very effective. I do not wish to take to the conventional mechanism. You will be dealing with national parks, tiger reserves, wildlife sanctuaries, protected areas. My dear officials, you will be dealing with tribes. You will be dealing with tribal culture. You will be required to be very sensitive. You will get first-hand experience of habitations in the forest. You will be exposed to sublimity of culture, pristine culture, its authenticity. As human beings, you will get a godly opportunity to serve that category. I have been involved in some capacity in focusing in this area. I can tell you, there can be nothing more satisfying and rewarding. Go to our forests and you will find dark bungalows. You can be deeply interested in having a diary daily, in being a photographer, in being a social scientist. And the moment you engage into these facets, you will be enlightening and enlivening the world about your role. You will be away, performing in the natural environment, away from concrete jungle. This is not an ordinary opportunity. It is a rare opportunity. Your service has been relevant, but relevance of this service in these contemporary times is at peak. Go to any part of the world, take note of any country, take the activities of United Nations, and you will find focusing on climate change. What exactly is climate change? Climate change is being affected by human activity. We are limiting climate change only to
glaciers coming down. No. Depletion of our forest land is one such facet. We have seen in our villages, we used to have jord, what is known as the common land, disappearing. बचपन में जिस गांव के अंदर तालाब देखा था, अब उस तालाब में पानी नहीं दिखता. बचपन के वो दिन याद हैं कि गाय भैंस तालाब के अंदर जाती थी, पानी इकट्ठा नहीं होता. गांव के जो जोड़े हैं, अनक्रोचमेंट हो गया है, इजी एरिया बन गया है. You will have tough time. Your role will be so enormous that even those who framed our constitution, they were extremely vigilant. And they indicated, I'll invite your attention to Article 48. It is in Part 4 of the Constitution, Directive Principles of State Policy. What does it say? I quote, to protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife, unquote. We are on a spree to destroy them. Now there are checks and balances. Our constitution was amended. There was a national mood that we care for fundamental rights. So a new chapter was added, Part 4A, and that was fundamental duties. And one of the duties in Article 51, capital A, I quote, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures, unquote. All these things, I'll take one by one, will be your prime obligation. By action to motivate everyone, like improve the natural environment. Go to any hill station, how recklessly plastics are thrown around. By whom? Educated people. They do it just for convenience. All efforts that you put them in this green block or the other block, a container that is kept, they don't see the difference between the two, and they throw it. We have to check this tendency. You will have to work for an ecosystem where people get little more involved, sensitive, responsible, and set an example to others. Second, forest, lakes, and rivers. What have we done to our lakes, our rivers, our riverlets? We think to pollute them हमारा राष्ट्रीय धर्म है. कोई हमें चेक नहीं करेगा, कुछ भी करेंगे. You will have to generate awareness. And mind you, आप ऐसे समय रह रहे हो जब अवेयरनेस जनरेट करने के आपके पास बहुत साधन हैं. मैंने कुछ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिशियल्स को अप्रिशिएट किया है सोशल मीडिया पर. उनमें एक पश्चिम बंगाल में है, वो क्या फोटोग्राफ देते हैं, क्या सीन को बताते हैं. आदमी दंग रह जाता है जब हथिनी अपने बच्चों को सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक को कैसे रोकती है. हम कितने प्रभावित होते हैं
कि जो हैंड होल्डिंग एटीट्यूड है कि दीवार को स्केल करते हैं तो ऊपर से वो अपना हाथ फैलाते हैं. We have to learn from them. We have to imbibe their sublime qualities of heartfulness, of sympathy, of compassion, of coexistence. ये आप लोगों का है. Carry an impression from here that there can be no more rewarding service than yours at the moment. देश और दुनिया से दूर लोग आकर क्या करते हैं, 3 दिन हम रणथंबोर भी बिता लें, हम सफारी पर चले जाएं. आप लोगों का तो दायित्व भी है, आप लोगों के लिए मौका भी है. And it will keep you healthy and fitter as never before. Forest wealth में we are 10th in the world. Why? We have to be qualitative. यदि अगर आप इतना ध्यान देंगे कि फॉरेस्ट में हमारे साधु संतों ने क्या करिश्माई काम किए हैं, उन्होंने हमें कितना बड़ा ट्रेजर दिया है. You can invite attention of the world at large by focusing on 1 or 2 items. आप सबने पढ़ा होगा विद इंटरेस्ट जिम कॉर्बेट. आप लोगों का काम तो जिम कॉर्बेट से बहुत ज्यादा है. Jim Corbett was, if you go through his entire working pattern, to give relief by eliminating the man-eater and chasing it. But आप फॉरेस्ट में जाकर देखोगे, और मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, कोएग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मैंने डिस्कवरी चैनल को देखा है, कई यंगस्टर्स को बताया, लॉयर्स को, कि आप डिस्कवरी चैनल देखिए. डिस्कवरी चैनल में आप देखेंगे द लायन, द टाइगर, द वेरी पावरफुल, वो अपने विक्टिम के लिए कितने पसर जाते हैं. देखा होगा आप सबने, जमीन पर पसर जाते हैं. द टाइगर लेवल्स हिमसेल्फ विद द ग्राउंड, आवाज नहीं निकालते हैं, चूज देयर ओन टाइमिंग. वी ह्यूमन बींग्स कैन लर्न अ लॉट. वी हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड. That has to be the level of preparation. That has to be the absolute commitment. सबसे पहले एज एन एडवोकेट, जब मैंने एक केस के बारे में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कोई ला रहा था, फॉरेस्ट एक्ट का वायलेशन हो गया. वायलेशन हो गया तो मुकदमा हो गया, वकील बीच में आ जाता है. तो मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर को कहा कि आप इतने आखिर अनअवेयर कैसे हो सकते हो? ये लकड़ी वहां पड़ी थी, इसको ले आए, हो क्या गया है? वो दिन मुझे आज तक याद है. उन्होंने कहा, वकील साहब, आपको ये नहीं पता कि फॉरेस्ट क्या है. फॉरेस्ट का मतलब है जो चीज वहां गिरी है वहीं पर वो बायोलॉजिकली डिग्रेड होगी, वो खाद बनेगी, वो होगी ऊपर, तब फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट को आप प्लांटेशन से कंफ्यूज मत करो. मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट बहुत गहराई का सब्जेक्ट है, बड़ी भारी डेप्थ का है. यू हैव अ वेरी डायनेमिक मिनिस्टर, श्री भूपेंद्र यादव. ही हैज मेड ग्लोबल इम्पैक्ट. He is very passionate about it.
मानकर चलता हूं कि आप सबकी प्रतिभा को वो दुनिया के पटल पर लाएंगे। जिस विषय के बारे में आप बोल पाओगे, उस विषय के बारे में ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेट नहीं बोल पाएगा। और यही है कारण, जब पूछा कि द टाइगर वॉज रनिंग आफ्टर द डियर, टाइगर इज नोन टू बी पावरफुल, बट टाइगर कुड नॉट कैच द डियर। व्हाई? टाइगर वॉज रनिंग फॉर फूड एंड डियर वॉज रनिंग फॉर लाइफ। ऑन द पॉइंट ऑफ नॉलेज, इस एनालॉजी को अदरवाइज मत लेना। आपके पास नॉलेज है और उनके पास बुकिश होगा। आपने 2021 से जो चालू किया है और जो मुझे बताया है कि सुंदरबंस में क्या देखा, आई बीन टू दैट एरिया। कितना इम्पैक्टफुली दो पार्टिसिपेंट्स ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अपनी बातें कही हैं, वेरी इमोटिव। वो समय का ध्यान रख रहे थे, बट दीज आर इश्यूज। तो ईच ऑफ यू विल हैव टू बी एन एम्बेसडर to preserve environment, to generate wholesome ecology, to arrest the downsliding of climate change. मैं अलास्का गया हुआ हूँ, ग्लेशियर को देखा, मैंने बर्फ को टूटते हुए देखा है। मुझे कहा गया, just before I became governor state of West Bengal in 2019, परिवार ने कहा कि मॉरिशस चलना चाहिए। मैंने कहा अर्जेंसी है क्या? बोला पता नहीं पानी में कब डूब जाए। We stayed at a resort. That place is known for island resorts. तो मैंने खुद देखा कि ज्यादा फर्क नहीं रहा है। जब एक क्रूज में जा रहा था, मेरे और डॉक्टर सुदेश धनखड़, मेरी वाइफ का केबिन बहुत वेल सिचुएटेड था, जो अक्सर सीनियर एडवोकेट्स का होता है। समझदार लोग बहुत व्यवस्था करते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हो। तो हमारे साथ 4-5 किलोमीटर तक वेल्स का ग्रुप चलता रहा। तो मैंने कैप्टन को कहा कि यहाँ कोई वेल एक्सपर्ट है क्या? तो उसने कहा बुलाता हूँ, थोड़ा प्रोफाइल मेरा ठीक ठाक है, तो उन्होंने बुलाया। तो पहले हालात ये था कि समुद्र में वेल बोलती थी तो 3000 किलोमीटर दूर आवाज आती थी। इसमें करीब 80% रिडक्शन हो गया है। तो चैलेंज आ रहे हैं, पर कैन वी एंजॉय दीज चैलेंजेस इफ द प्लेनेट डजंट सर्वाइव? वी कैन नॉट। तो आपका काम तो एडमिनिस्ट्रेशन के बियॉन्ड हो गया है, दैट यू आर एम्बेसडर्स ऑफ नेचर। एंड आपका रोल बहुत बड़े गवर्नेंस में भी है। योर एक्टिविटीज विल टच द लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल, ट्राइबल कल्चर, और उसमें थोड़ा भी आप ध्यान देंगे तो खाने पीने का तरीका, उनके रहने का तरीका, उनकी वेशभूषा का तरीका, उनके मकान का तरीका, उनके लाइवलीहुड का तरीका, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप में से कहा कि आप अंडमान निकोबार गए थे, वहाँ कुछ एरिया प्रोटेक्टेड, उसको जाकर कभी देखा होगा तो पता लगेगा। भारत के संविधान में खास प्रावधान है ट्राइबल डेवलपमेंट एरिया का, आप लोगों का उसमें रोल है। ये ऐसा प्रावधान है अंडर अ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज ऑल द पावर्स।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कौन से काल में हो? अमृत काल में हो, और आप इस देश को ले जाओगे, फिर वी ऑन दिस साइड एंड दोज इन द फ्रंट रो may not be very functional when India will have 100th year of its independence. पर आज के दिन दुनिया को देश वो दिखा रहा है जो दुनिया ने कभी कल्पना नहीं की थी. Over 2 billion vaccinations of COVID have been administered. First dose, second dose, booster. पर जिस चीज का ध्यान ज्यादा नहीं जा रहा है, और जो अमेरिका में भी संभव नहीं हुआ है, वो सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन हर एक के मोबाइल पर है. उसका नतीजा कितने पेड़ बच गए. मैंने वेस्ट के एक लीडर को कॉम्प्लीमेंट किया कि आप अपनी पेपर इंडस्ट्री का बहुत ध्यान देते हो. मेरा आशय था कि आप डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए. अब आपको मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को. पानी का उपयोग, पेपर का उपयोग, ये आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के आधार पर कैसे हो सकता है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के आधार पर आपकी क्वालिटी हो सकती है कि मैं इस क्वालिटी का राइस खाऊंगा. योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैन नॉट गो अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं एक पेपर पर एक लाइन लिखूंगा. गांधी जी ने तो उस समय इन चीजों पर ध्यान दिया था. तो माई वेरी बेस्ट विशेस टू यू, and your families must be proud of you, really proud of you, that you are part of governance at the platinum level. I wish you well. How many of you are married? And mind you, good, our friend from Bhutan also. Those who are not, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ आपके घर वाले काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा. जो बहुत मुश्किल काम होता है उसको आप लोगों ने आसान कर दिया है. और मैं जानता हूँ, मैं खुद एजुकेशन का प्रोडक्ट हूँ. आई हैव सीन कि लाइफ में कमी क्या है, साधन के अभाव का क्या मतलब है. स्कूल पैदल जाकर पढ़ना पड़ता है तो क्या लगता है, लालटेन की रोशनी के अंदर पढ़ना पड़ता है. और हमेशा तमन्ना रहती थी कि लालटेन के बजाय वो लैंप मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे. आप सबने ये देखा है. सडनली, बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन फेयरनेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यू गोट थ्रू and you have come in the big league. Each of you must motivate others to be in the same line and take it as a mission. Execute with passion कि प्लांटेशन हो. मैंने चेयरमैन राज्यसभा की हैसियत से हर माननीय सदस्य को एक अनुरोध किया है कि वो एक साल में कम से कम 100 पेड़ लगाएं. बहुत बहुत शुभकामनाएं. माई ग्रीटिंग्स टू यू फॉर द न्यू ईयर, फॉर द क्रिसमस, फॉर नंबर ऑफ फेस्टिवल्स वी हैव इन द मंथ ऑफ जनवरी, and convey my best of regards to your parents. Thank you so much. Jai Hind.